Good morning, students. In previous classes we have discussed about the different type of formula, how can we find the formula, and how many unit cells belongs to any cubic cell. Today we are going to discuss about Bravais lattice. Okay, Bravais लैटिस। तो ब्रेवियस लैटिस होता क्या है? डिपेंडिंग ऑन एजेस एंड इंटरफेशियल एंगल्स there exist seven type of crystal system, and based on the type of unit cell there exist overall 14 types of lattices. Okay, depending on ages and interfacial angles there exist 7 type of crystal system, and based on the type of unit cell there exist overall 14 type of lattices. They are known as Bravais lattices. ओके, अब चलो कौन कौन से होते हैं। तो इसके लिए हम एक चार्ट बनाते हैं जिसमें क्रिस्टल सिस्टम, सेकेंड में लिखते हैं एजेज, थर्ड हो जाएगा हमारा इंटरफेशियल angle, and here number of unit cell. अब इसके लिए एक ट्रिक भी है, तो वो ट्रिक क्या है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ट्रिक, इसे याद रखने का सिंपल ट्रिक है सी टोर HMT। आपको याद रखना है सी टोर HMT। ओके, C stands for cube, T stands for tetragonal, O stands for orthorhombic, R stands for rhombohedral, H stands for hexagonal, M stands for monoclinic, and T stands for triclinic. Now we are going to discuss about the ages. Which crystal system has what type of ages? तो क्यूब हैज A is equal to B is equal to C, tetragonal A is equal to B not equal to C, whereas orthorhombic A not equal to B not equal to C. Same we have to repeat here. Rhombohedral A is equal to B is equal to C. Hexagonal
A is equal to B not equal to C, and monoclinic A is not equal to B not equal to C. Same as triclinic has A not equal to B and not equal to C. Now interfacial angles, they are alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. Same as alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री. ये तीनों सेम होंगे. ओके. आफ्टर दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. हेक्सागोनल के लिए क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा इक्वल टू 120 डिग्री. इसमें याद रखना है गामा कितना होता है? 120 डिग्री. नाउ अल्फा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. In the last triclinic, it stands for alpha is equal to, alpha is not equal to beta, is not equal to gamma, and they all are not equal to 90 degree. Now unit cell, number of unit cell, क्यूब में कितने होते हैं? 3, then 2, 3, 2, 4, 1, 1, 2, 1. ये याद रखना है आपको. 3, 2, 4, 1, 1, 2, 1. If we calculate all, it gives 14 lattices. 3, 2, 5, 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13 and one more 14. 14, and this 14 is known as Bravais lattices. Rhombohedral alpha equal to beta equal to gamma is not equal to, ये not equal to 90 डिग्री होता है, सॉरी. एंड इन द लास्ट this one, alpha equal to beta equal to 90 degree and alpha gamma equal to alpha equal to gamma equal to 90 degree and beta is not equal to 90 degree, not equal to 90 degree. This one more. Okay.